हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टारगेट फुल ऑन फुल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रेड 8 का चैप्टर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन। तो पिछले इस चैप्टर में हम पढ़े थे कि भारत के ऊपर जो लोकल नवाब्स, राजा, जमींदार्स ये थे, इनके ऊपर ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश शासन का इम्पैक्ट क्या हुआ था। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि ये स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस था। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल पे नए हो, जल्दी जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। सो आज हम पढ़ेंगे टू दी पॉइंट हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म एंड ट्रेडिशन ऑफ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, हाउ ओरिएंटलिस्ट वेर क्रिटिसाइज्ड एंड व्हाट ईस्ट इंडिया कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड द रूल्स फॉर द नेटिव एजुकेशन। टू दी पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले ओरिएंटलिज्म से पढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं कि व्हाट इज ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म इट्स मीन दैट द स्टडी ऑफ द एशियन लैंग्वेजेस। ओके, द स्टडी ऑफ एशियन लैंग्वेजेस, इसको बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। दोज पीपल who are studying the Asian languages, they are became known as the Orientalist. Okay, so Orientalism का जो ट्रेडिशन है that started in India in the 1780s। तो आप पीपीटी में देख पा रहे हो कि एक व्यक्ति का फोटो दिया हुआ है, एंड ही इज द विलियम जोन्स, द फादर ऑफ ओरिएंटलिज्म, हु स्टार्टेड द डिस्कोर्सिंग द ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज इन इंडिया। सो फर्स्ट, द विलियम जोन्स in 1783 arrived at Calcutta. In better to say, in 1783, a person named William Jones arrived at Calcutta. He had an appointment as a junior judge of the Calcutta Supreme High Court. तो इन्होंने किस लिए भारत में आया था? Because he was appointed as the junior judge of the Supreme Court of Calcutta. Second, third, he was one of the prominent linguist। मतलब लिंग्विस्ट का मतलब होता है कि someone who knows the several languages, जो कि सेवरल लैंग्वेज माने एक से ज्यादा भाषा जानते हैं। चलो लेट अस सी के हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर नोन बाय विलियम जोन्स। लेट्स सी। फोर्थ पॉइंट, he had studied in Greek and Latin at Oxford, and besides he knows Arabic, Persian, French and English. At Calcutta, he began spending many hours with the Pandit to learning the Sanskrit, and the Pandit taught him the Sanskrit. And after learning the Sanskrit, fifth point, he soon began studying the ancient Indian text on philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences. So ये अगर आपके सवाल में आता है कि राइट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द विलियम जोन्स, ये आपको पांचों पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि विलियम जोन्स 1783 में भारत में आए थे। विलियम जोन्स कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था। तीसरा पॉइंट, विलियम जोन्स एक लिंग्विस्टिक थे। विलियम जोन्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक और लैटिन को चर्चा किए थे, उसके साथ साथ अलग अलग भाषा भी जानते थे, जैसे कि फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन। उसके साथ साथ जब भारत में आए थे, वो पंडितों के साथ समय बिताने लगते हैं और संस्कृत सीखते हैं, और संस्कृत सीखने के बाद भारत की जो एंशियंट जो टेक्स्ट है, उसके जो फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स के ऊपर जो टेक्स्ट है, वो कंटिन्यूअसली वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। यू कैन सी इन द पीपीटी that Jones discovered that his interests are shared by the many British officials at Calcutta। उनके जो इंटरेस्ट था, सारे ब्रिटिश ऑफिशियल कैलकाटा में ये जो इंटरेस्ट है वो लिख रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। And not only William Jones, he made two Englishmen for establishing the Asiatic Society. Englishmen like Henry Colebrook and Nathaniel Halward were also busy in the discovering of ancient Indian heritage. So along with them, that means William Jones along with Henry Thomas
Henry Thomas Colebrook, and along with the uh, that person Nathaniel Halhed established the Asiatic Society in Calcutta in 1784. It is the story of the establishment of Calcutta Asiatic Society, and along with them, when they founded the Asiatic Society, they started a journal which was known as the Asiatic Researchers. ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, बोल्ड बोर्ड में लिखा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा देख लेना. Now, how the Orientalist practices or discourses was going on? Let's see. Jones and Colebrook had a deep respect of Indian cultures and as well as the Western cultures. जोन्स और कोलब्रुक्स का इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ क्या था, एक डीप रेस्पेक्ट था. अगला क्या हुआ? So Jones and Colebrook went about the discovering ancient text, understanding their meaning, translating them and making findings known to others. मतलब जोन्स एंड कोलब्रुक क्या किए, भारत की जो जो एंशियंट जो टेक्स्ट है उसके ऊपर चर्चा करने लगे और उसको समझने लगे, उसका मीनिंग ट्रांसलेट करने लगे, और वो जो समझे है उसको दूसरे को मतलब फैला रहे हैं. दैट मीन्स दूसरों को मतलब जानकारी दे रहे हैं. By this project they thought that the British would become the guardian as well as the master of the Indian culture. इनको ये लगा कि ये अगर हम करेंगे तो ब्रिटिश क्या हो जाएंगे, भारत की सभ्यता का गार्डियन बन जाएंगे और उसके साथ साथ मास्टर भी बन जाएंगे, क्योंकि दुनिया को दिखाएंगे भारत की सभ्यता. सो नेक्स्ट, influenced by such ideas, many British felt that Orientalist institution should be set up for the discoursing of Orientalism. So officials also thought that Hindus and Muslim ought to be taught what they are familiar with. मतलब ये लोग सोचते हैं कि मतलब अगर ऐसा होता है कि तो ओरिएंटलिस्ट का इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए और हिंदू और मुस्लिम को वही पढ़ाना चाहिए जो कि इनके जानकारी में है. इसीलिए इसीलिए they believe that uh, by this process they could win the heart of the Indian. मतलब ऐसे अगर वो करेंगे तो ब्रिटिश भारतीय लोगों का दिल जीत पाएंगे, एंड दे कुड मेक अ प्लेस इन देयर हार्ट, दिल में जगह बना पाएंगे. तो ये ओरिएंटलिज्म की चर्चा थी. और इसके साथ साथ क्या हुआ कि इन 1781 with this object of view, a madrasa which was known as the Calcutta Madrasa was set up by Warren Hastings in 1789, and in 1791, so 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था. तो these are the two institution that was set up for the discourse of Orientalism. Now we are seeing that Orientalists set up the institutions for discoursing the Asian language, literatures. Even for the Muslims, they are set up the different institutions, Hindus for the different institutions. But not all these British officials at that time welcomed the Orientalist. Many of them criticized the Orientalist. Let us see how they have criticized. That is the PPT. So, from the 19th century, British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. So, they criticize by saying themselves that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. भारतीय सभ्यता के जितने भी ज्ञान है वो एकदम एरर है, यानी गलत है और अनसाइंटिफिक है. ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड. ईस्टर्न लिटरेचर जो है वो एकदम सीरियस नहीं है और लाइट हार्टेड है. So they argued that it was wrong for the British to spend so much effort on encouraging the Sanskrit language and literature. तो इसीलिए ब्रिटिश के लिए ये गलत होगा कि ब्रिटिश संस्कृत लैंग्वेज को इनकरेज ना करे और इसके ऊपर पैसा खर्चा और समय बर्बाद ना करे. So these are the three criticism by the anti-orientalist. First क्या था कि ईस्टर्न लिटरेचर was full of errors and unscientific thought. Number two is
So the literature is non-serious and light-hearted, and so it is wrong for the British to spend much effort and encourage in the Sanskrit literature. So these are the 3 points. Now you can see that how James Mill attacked the uh, Oriental vision of learning. You can in the previous PPT you have seen that a picture that was the James Mill, and you know that quite familiar with the James Mill. James Mill bifurcated the Indian history into 3 parts. That is ancient Indian history, medieval Indian history, and modern Indian history. Now let's see how he has criticized the Orientalist. James Mill, one of those who attacked very hard to the Orientalist, and he said that, and he declared that uh, mm, British should not try to win the हार्ट ऑफ द इंडियंस. भारतीय लोगों की दिल जीतने की कोई जरूरत नहीं होती थी. द एम ऑफ द एजुकेशन ought टू बी what इज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल. शिक्षा की मुद्दा यही होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो. नंबर 3, so Indians should made familiar with the scientific and technological advances that West has made. तो इंडियंस भारतीय लोगों की उसी चीजों से परिचित कराना चाहिए, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि वेस्टर्न में या वेस्ट में डिस्कवर हुआ है. नाउ let us see how Thomas Babington Macaulay has criticized the Orientalism. You can see in the PPT Thomas Babington Macaulay. Now Thomas Babington Macaulay, during the 1830s, the attack on the Orientalists became more harder. Thomas Babington Macaulay saw India as uncivilized country and it needed to be civilized. मतलब भारतीय लोग असभ्य है और इसको सभ्य करना है, जिसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश के ऊपर है. उन्होंने ये भी बताया था कि नो ब्रांच ऑफ द ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कंपेयर्ड विद द इंग्लैंड. भारतीय सभ्यता की कोई भी ब्रांच, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंग्लैंड के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है. And he also said a single shelf of European library, good library, was worth the whole of native Indian literature. इन्होंने ये बताया एक शेल्फ जो है यूरोपियन लाइब्रेरी का, वो पूरे भारत की जो साहित्य है उस साहित्य की बराबर होती है. So with this great energy and passion, Macaulay emphasized to teach the English language in India. इसीलिए मैकॉले भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को शिक्षा की माध्यम बनाना चाहते थे. एंड ही फेल दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वेस्ट. तो इन्होंने ये बताया अगर अंग्रेजी शिक्षा की माध्यम हो जाए तो भारतीय लोग पूरे पश्चिमी सभ्यता की जो सुंदर सुंदर साहित्य है वो सुंदर साहित्य पढ़ पाएंगे. नाउ following Macaulay Minute, that means Macaulay wanted that English education should be implemented. So following the Macaulay Minute was implemented in the 1835 2nd of February. You can see in the PPT that is in the picture. Macaulay Minute has been implemented in the 2nd of February 1835. So what was written in that Macaulay Minute? What was the objective of the Macaulay Minute? Now, according to the Macaulay Minute, English Education Act 1835 was introduced. English became the medium of instruction for higher education. अंग्रेजी हायर एजुकेशन के मीडियम बन गए. Secondly, the Oriental institutions like Calcutta Madrasa and Benares Sanskrit College were seen as the temple of darkness, अंधेरा की मंदिर. ठीक है, ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन हैज बीन सीन एज द टेंपल ऑफ डार्कनेस, अंधेरा की मंदिर के तरह दिखा गया. सो एंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगन टू प्रोड्यूस फॉर द स्कूल्स. इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्कूल के लिए प्रिंटेड करना चालू कर दिए थे ब्रिटिश. ये था ओरिएंटलिज्म का क्रिटिसिज्म. ओरिएंटलिज्म एंड इट्स क्रिटिसिज्म. ओरिएंटलिज्म स्टार्टेड बाय विलियम जोन्स, Nathaniel Halward and Henry Thomas Colebrook. Now we can see the
education for the commerce, which is also known as the Woods Dispatch. You can see in the PPT. So what was the Woods Dispatch? We will see first. Then what is the objective of the Woods Dispatch, and what are the implementations of the Woods Dispatch, or what are the measurements has been implemented in through the Woods Dispatch. Now let us see first who was Wood, Charles Wood, and what was his dispatch. So in 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch or instruction to the Governor General of India, issued by Charles Wood, the President of the Board of Control of Company, and it was came to be known as the Woods Dispatch. मतलब 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी का लंदन में, वो गवर्नर जनरल जो है इंडिया की, उसको एक एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन भेजे हैं जो कि इशू किए थे चार्ल्स वुड ने, और ये वुड्स डिस्पैच के नाम से जाने जाते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज expected, or what is the objective, what was the objective of the Woods Dispatch. First, it emphasizes once again the practical benefits of the system of European learning. ये इसके ऊपर एम्फेसिस किए थे, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो है शिक्षा की, जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होती है उसके ऊपर ये एम्फेसिस किए थे. तो दूसरा क्या कि ये बता रहे कि यूरोपियन लर्निंग, इट इज सेड, एनेबल इंडियंस टू encourage or recognize the advantages of economically, which was growing through the trade and commerce. व्यापार के माध्यम से भारत की जो आर्थिक प्रगति हो रही थी उसका जो एडवांटेज भारतीय लोग ले पाएंगे, तभी ले पाएंगे जब अंग्रेजी एजुकेशन उनका माध्यम होगा. थर्ड, उन्होंने ये भी बता रहा था, मतलब उस डिस्कस में ये बताया, इंट्रोड्यूसिंग द यूरोपियन लिटरेचर और यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम, it will change the way of life of Indians, with change of the taste and desires. इनका जो लाइफ का जो टेस्ट है, लाइफ का जो डिजायर्स है, और इनका जो लाइफ का जो वे है, जीवन की जो धारा है, सब कुछ बदल देगी. और ये भी बता रहा था उस डिस्पैच में, इट वाज आल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इंप्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस. भारतीय लोगों की जो नैतिक चरित्र है उसको इंप्रूव करेंगे, उसको बेहतर बनाएगा. एंड लास्टली, इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट. ये अंग्रेजी एजुकेशन भारतीय लोगों को ट्रूथफुल और ऑनेस्ट भी बनाएंगे. नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द मेजरमेंट इंप्लीमेंटेड थ्रू द वुड्स डिस्पैच. So following the 1854 Woods Dispatch, several measures were introduced. 3 मेजर हम लोग देखेंगे. एक नंबर जो है कि there is a establishment of the educational department by government of India across the India. Number 2, 3 universities were set up, or for the university learning in the three presidencies, that is Calcutta, Madras and Bombay. And number 3, that is several measurement was taken to brought about the changes of the school education. स्कूल एजुकेशन की बहुत सारे चीजों को लेकर स्कूल एजुकेशन को चेंज करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए. फॉर एग्जांपल, आई कैन गिव यू दैट कि टीचर्स ट्रेनिंग वर मेड मैंडेटरी. देयर इज अ कंपल्सरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन सेकेंडरी स्कूल एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो ये था उस डिस्पैच का. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है. अगर समझ में नहीं आता है तो लाइक कमेंट करके बताना, देन डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू दैट. और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना. और आज के लिए यही, और मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.